Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So we will continue with our lecture, Indicators of Economic Development. In the previous lecture, we have already studied two indicators, Real Per Capita Income and NEW. In this lecture, we will continue with Physical Quality of Life Index (PQLI) and Human Development Index (HDI). Physical Quality of Life Index was introduced by M.D. Morris in 1979, and it was used from 1979 to 1990. In 1990, Human Development Index (HDI) came into existence, and after that, PQLI was no longer used to measure economic development. PQLI is the average of three important statistics. What are these three statistics? Basic literacy rate, infant mortality, and life expectancy. And these all are equally weighted. These all were equally weighted when we are calculating the PQLI. It was widely used till 1990 when HDI was introduced. So let us study these three components or three statistics in detail. What is infant mortality? Infant mortality is how many children are dying which are below the age of 1 year. Infants are children which are from 0 to 1 years old. So infant mortality measures how many children are dying before attaining 1 year of age. Second is the life expectancy. It is the average lifespan of the people. How many years an average person of a country will live is the life expectancy. The third one is the basic literacy. It is the ability of the adults to use a language, that is to read, to write and speak. So this is very basic literacy. You are able to read, write and speak. So that counts basic literacy. So PQLI is the average of infant mortality, life expectancy and basic literacy. We find these parameters and we add these and divide by 3 to come at the average, and that average value is the PQLI. This indicator was used from 1979 to 1990. In 1990, when HDI came into existence, this PQLI was no longer used. As we know that economic development touches upon well-being of a human, and these are the only three dimensions. These three dimensions do not adequately cover the well-being of an individual, whereas Human Development Index is much broader and much comprehensive than the other three indicators that we have discussed: PQLI, Real Per Capita Income and NCW. So let us study about Human Development and Human Development Index. Before going to Human Development Index, we need to understand what is human development. What is the meaning of human development? So human development kya hai? Human development approach, it was developed by the economist Mahbub-Ul-Haq, and it is based on the Nobel laureate Amartya Sen's work on human capabilities. Human development is often framed in terms of whether people are able to be and do desirable things in life. Human development approach जो है ये महबूब-उल-हक ने इसको डेवलप किया था, and it is based on the work of Amartya Sen. He is also famous economist, and he worked on the concept of human capabilities, whether we are making human capable enough to live a meaningful life. सो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वेदर पीपल आर एबल टू बी एंड डू डिजायरेबल थिंग्स इन लाइफ, वेदर दे आर एबल टू बी वेल फेड, वेदर दे आर गेटिंग शेल्टर, वेदर दे आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ, वेदर दे आर एबल टू गेट वर्क, good education, whether they are able to vote in the elections, whether they are able to participate in the community life. So it means whether people are able to be and do desirable things in life. क्या आपने लोगों को इतना केपेबल बनाया है कि वो अच्छा काम उन्हें मिल सके, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिल सके, दे आर एबल टू वोट, दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी लाइफ, उनको खाने की चिंता नहीं है, उनको प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है. अगर ये सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट यस, ह्यूमन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज सेंट्रल टू दिस अप्रोच. ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द ह्यूमन कैपेबिलिटीज, वेदर दे आर केपेबल टू डू सर्टेन थिंग्स, एंड सेकंड थिंग इज वेदर दे हैव सर्टेन चॉइसेस इन लाइफ.
क्या उनके पास एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की चॉइस है? क्या उनके पास अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी की चॉइस है? दे शुड हैव चॉइस एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज देयर चॉइसेस। उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, बेस्ट फैसिलिटी दे पाएं। Someone choosing to be hungry during a religious fast, for example, is quite different from someone who is hungry because they cannot afford to buy food. Basically choice होनी चाहिए, खाना होना चाहिए उसके पास, खाना खाना है या नहीं खाना, इट्स हिज और हर चॉइस। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप याद कर लीजिए। यू कैन यूज दिस कंसेप्ट इन essay, you can use this concept in other papers. Apart from economics, you should know that human development relates to human capabilities and freedom of choice. So now we have understood human development. Let us go to the human development index. It is the index which tries to measure human development or economic development, because both are very very interlinked. Both human development and economic development try to enhance the well-being of an individual. Although there is difference between human development and economic development, but nevertheless, both also have certain overlapping features. So Human Development Index, HDI, it was developed by UNDP, United Nations Development Program, in 1990s by a team of economists of UNDP. Who are these economists? Professor Mahbub-Ul-Haq, as we discussed earlier, and Professor Amartya Sen, who also got Nobel Prize in 1998 for his work in the field of poverty and famine. HDI is published since 1990 in Human Development Report of UNDP. लगभग हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है और उसके अंदर HDI कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज़ का HDI आपस में कंपेयर किया जाता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 3 डायमेंशंस को कवर करता है। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज नॉलेज, एंड थर्ड वन इज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो डायमेंशंस हैं, इनके क्या इंडिकेटर्स HDI में यूज़ होते हैं वो हैं, फर्स्ट इंडिकेटर्स फॉर अ हेल्दी लाइफ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. For knowledge, the indicators which are used are, two indicators are used. First is expected years of schooling and the second is mean year of schooling. और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वो है GNI पर कैपिटा, और ये हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे मेजर करते हैं. PPP क्या है, GNI क्या है, ये हमने अलग से एक लेक्चर पे डिस्कस किया हुआ है. इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस इट अगेन हेयर. आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं. इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे 3 इंडेक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड GNI इंडेक्स. और इन 3 इंडेक्सेस से हम HDI बनाते हैं. HDI जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड GNI इंडेक्स का. So let us study this in more detail. HDI is based on 3 dimensions. First is the health, long and healthy life. It is measured by life expectancy at birth. And what is life expectancy at birth? It is defined as the average number of years a newborn child is expected to live. So एक child जो कि newly born हुआ है, for how many years he will live on average, उसे ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं. इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी is around 69 years approximately. As per the latest Human Development Report, it is 69.7 years. The index which is used to measure this is Life Expectancy Index, LEI. The second dimension of the HDI is knowledge. This dimension is based on 2 indicators. First is the mean years of schooling and the second is the expected years of schooling. What is mean years of schooling? Mean years of schooling is the average number of years of education received by people aged 25 or more during their lifetime. Basically इसके अंदर 25 साल से ऊपर के जो 25 साल से ऊपर की जो एज के जो लोग हैं उनका सर्वे किया जाता है. कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 70 साल का है, और उनसे पूछा जाता है कि आपकी ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, टोटल कितने ईयर्स तक आपने एजुकेशन प्राप्त की है. इन इंडिया मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 6.5 ईयर्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 25 साल या उससे ज़्यादा का एक एवरेज एडल्ट जो है वो अपनी लाइफ टाइम में अराउंड 6.5 साल ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव करता है.
स्कूलिंग का मतलब सिर्फ स्कूल से नहीं है, स्कूलिंग का मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ है। बेसिकली हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट वी राइट इट एज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स of schooling that a child of school entrance age can expect to receive if prevailing pattern of age specific enrollment rates persist throughout the child's life। जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो हम 25 ईयर्स के नीचे जितने भी लोग हैं उनके लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी कोई चाइल्ड जो है वो स्कूल में है या फिर उस एज में है जिसमें वो स्कूल में जा सकता है, स्कूल में एंट्रेंस उसे लेनी चाहिए, और आज के टाइम पर जो भी सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं अगर वो कंटिन्यू रहते हैं, अगर वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द चाइल्ड्स लाइफ, आज की डेट में जो भी स्कूल एनरोलमेंट रेट है, कॉलेज एनरोलमेंट रेट है, अगर वो कंटिन्यू वही सेम रहते हैं थ्रू आउट द चाइल्ड लाइफ, सो व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया? इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 12 साल है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा कम से कम अपनी लाइफ टाइम में मिनिमम 12 साल की पढ़ाई तो करेगा ही ऑन एन एवरेज। These two dimensions, these two indicators, mean years of schooling and expected years of schooling, these are measured by education index, EI. The third dimension is the standard of living. It is measured by per capita income. This value is measured by GNI per capita. बेसिकली हम ग्रोस नेशनल इनकम निकालते हैं और उसको कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। GNI डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, वी अराइव एट पर कैपिटा इनकम, और ये PPP टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। PPP इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि डॉलर्स में मेजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुड या सर्विस है, कोई गुड है या कोई सर्विस है जो कि USA में $1 में मिलती है, तो इंडिया में वही गुड और वही सर्विस कितने रुपीज़ में मिलेगी। हम PPP और GNI जो है ये अलग से लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो discussing these parameters again here will be a deviation from our topic. The index which is used to measure this dimension is the GNI index, gross national income index. तो बेसिकली क्या किया जाता है, एक हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और GNI इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है हर एक कंट्री का। फिर उसका HDI, उस कंट्री का HDI कैलकुलेट करने के लिए उसका जियोमेट्रिक मीन निकाला जाता है। इन 3 इंडेक्स का, GNI इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स का जियोमेट्रिक मीन जो है वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। आई विल रिपीट वंस अगेन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 3 डायमेंशंस हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन डायमेंशंस के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये इंडिकेट करता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये इंडिकेट करता है नॉलेज को कि सोसाइटी में कितनी नॉलेज है। GNI पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी इन डॉलर्स, ये इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री में क्या है। इन चीज़ों को, इन डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स को अराइव करने के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो इस इंडिकेटर पे बेस्ड होता है और इस डायमेंशन को वो मेजर करता है। जो एजुकेशन इंडेक्स है वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है और नॉलेज को मेजर करता है। सिमिलरली इज द थिंग विद GNI इंडेक्स। सो नाउ लेट अस गो फर्दर। इंडिया का रैंक 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इज एज पर द ईयर 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? द नेक्स्ट फ्रंटियर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। ये जो टाइटल है कई बार इसको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि किस ईयर में क्या टाइटल था। 2020 का आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर MCQ में ये क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू एलिमिनेट इट और यू आर एबल टू गेस इट। नॉर्वे टॉप द इंडेक्स, फॉलोड बाय आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकॉन्ग एंड आइसलैंड। इंडिया के नेबर्स की परफॉर्मेंस क्या रही? भूटान का 129 है रैंकिंग HDI पे, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154, and these all are the countries with medium human development index. India का, भूटान का, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, we are placed in one category, that is medium human development. श्रीलंका का human development index इंडिया से far better है, its rank is 71.
So this is the data that I have taken from HDR 2020 Human Development Report 2020, जिसके अंदर इंडिया के HDI ट्रेंड को डिस्कस किया गया है. दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. इट्स 69.7 इन 2019. जो 2020 की रिपोर्ट है वो उसमें जो डेटा होता है वो 2019 का होता है, इसलिए ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 69.7 ईयर्स है इंडिया के अंदर इन 2019. 1990 के अंदर ये वैल्यू थी 57.9. सो येस, वी हैव मेड सर्टेन प्रोग्रेस. The expected years of schooling has also increased from 7.6 in 1990 to 12.2 in 2019. Mean years of schooling has increased from 3 years to 6.5 years. GNI per capita has increased from 1787 to 6681. And similarly, if we see the overall HDI value, Human Development Index value, in 1990 it was 0.429 and now it is 0.645. इसी ट्रेंड को ग्राफ के माध्यम के थ्रू समझाया गया है. सो दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड दिस इज द GNI per capita, it is also increasing, and this is the education which is also increasing. So this is the silver lining कि इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है. ऑल्दो पेस जो है वो स्लो है, it is a matter of debate, but nevertheless things are improving. Now let us study what are the limitations of Human Development Index as a measure of economic development. सबसे पहला limitation जो है वो ये है कि economic development is a multi-dimensional concept, and HDI measures only 3 dimensions. What about other dimensions like social dimension, environment dimension, which are not included in Human Development Index? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वेल-बीइंग, वेलफेयर से रिलेटेड है, और वेलफेयर के अंदर सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल डिफरेंट डायमेंशंस आती है, बट HDI मेजर्स ओनली 3 डायमेंशंस. सेकेंड लिमिटेशन है वो ये है कि द 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर itself qualitative and subjective in nature. Therefore it is difficult to measure these dimensions accurately. इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ है, जो नॉलेज है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, these all are qualitative aspects, these are all subjective aspects. हम हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर कर रहे हैं, तो क्या ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्या ये एक्यूरेट मेजर है हेल्थ का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द हेल्थ, बट इट डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हेल्थ के अंदर और बाकी चीज़ें भी आती हैं. व्हाट अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज़, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं. तो HDI में हम वो सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ विच इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. देयरफॉर जो 3 डायमेंशन HDI में इंक्लूड की गई हैं वो खुद ही क्वालिटेटिव हैं, वो खुद ही सब्जेक्टिव हैं, उनको एक्यूरेटली मेजर करना डिफ़िकल्ट है. And this is the limitation of Human Development Index. Now the next question which arises is that if these are the limitations of HDI, how can we overcome these limitations so that we can accurately measure the economic development of a country? So HDI in itself is okay, it's good, but we need to supplement it with other indices such as happiness index, hunger index, gender gap index and so on. अगर हम इन इंडेक्स को भी इंक्लूड कर देंगे HDI के अंदर, so it will become more comprehensive and we can closely measure the economic development of a country.